Hello everybody. Welcome back to another session on logic development. We are discussing a very interesting and important concept, that is loops. I had given two problem statements yesterday. Can somebody quickly share the problem statement first before you share the solution? I had shared one file which was having the problem statement. Can somebody quickly share the problem statement? Thank you, Prithviraj. So I have shared the problem statement that was assigned. The reason for that is I need to know what the problem is, isn't it? Because if I look at the solution without looking at the problem, that won't make sense. So let us have a quick look at problem. How many have helped Mr. Bhide to solve this problem? कितने लोगों ने भिड़े को help किया है? How many of you have solved Bhide's problem? First one. Okay, Ashish has solved. What about others? Kaustubh has solved. बाकी लोग? Halfway sir, मतलब Halfway. Okay, ऐसा क्यों? लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। Logic थोड़ा सा गड़बड़ है. And that's very strange. How many have solved the prime number problem? Raise your hand. Ashish has solved. Prithviraj has solved. That's it. And Kaustubh. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, programming is not learned by watching somebody writing program. Programming is learned by solving the program. If you are halfway through, you are stuck up, you at least have applied your mind to it. That shows that atak gaye. You cannot find it, but at least apply your mind to it. I told yesterday that Sanjay concept bilkul galat tha, but I still appreciate it because what is more important is making an attempt. And I take my word, I promise to you, if you keep on making attempt, you are bound to get the right answer. There is no other thing perfect, not just perfect, efficient solution. But those who are just observing, watching, nothing will happen. No change in your thought process, nothing will happen. Okay, it happens only when you apply yourself to that given problem statement. Okay, well, Sanjay, have you shared the problem? Let's look at the second one first. That is a simpler one. Then we'll come to the one which Ashish is the only person who has solved. And I appreciate Ashish without looking at the code because he has made an attempt to solve both the questions. That's very good, Ashish. Okay, that is what is required. I don't even bother about I'm sure you must have done a good job. But then that confidence that you have got that you can share the solution, that itself is an indication that you have definitely done something. एक बार तो run करके देखा होगा. So there may be some mistakes which are corner cases, but probably it will address to the major issue. There may be some issues here and there, but major issues को तो solve किया रहेगा. What happens is now Ashish is solving, and yesterday also he had solved. I identified some mistakes. So when you solve, I review your code, I identify mistakes, I tell you, remember, you will never commit those mistakes again in your life. That's how the growth happens. Growth doesn't happen by just reading and not doing anything. Just watching the lectures regularly, you will not improve. If you really want to improve, I am taking efforts to analyze your code. Yesterday, even after getting Bhagyesh's solution, which was correct, we still saw the rest of the code. Why? Because I want to know you better. I want to understand how are you thinking. So I can give you personalized. I will understand more by looking at your code, not by looking at your face. But by looking at your face, I'll at least understand whether you're looking at the code or not. But by looking at your code, I understand how you think. And anytime you tell me, I can provide you a better guidance. But provided I understand you. If I don't know you, I cannot help you. Okay. So let's look at the solution for the prime. Prime Ashish has solved and Prithviraj has solved and Kaustubh has solved. No, Kaustubh ने prime नहीं किया solved? Nice, nice. नहीं किया. Okay. Who has solved prime? Sanjay ने solve किया prime? Yes or no, Sanjay? Yes sir, yes sir. Share करो ना फिर. Yes sir, share. Solve करके अपने पास रखा है, उस solution का क्या फायदा है? You have to share it. I can have a look at it. Sharing. Okay. I'll first have a look at the solution that Prithviraj has given for prime. Okay. So let's have a look at that particular solution. First, look at the problem statement. It says, accept integer and check whether it's prime. Continue the process till the prime number is not encountered. And every time we'll accept the number and check whether it's prime. Moment you find a prime number, you stop the process. Okay.
and you just print it's a prime number. So you are actually going to accept integers from user till a prime number is not found. So the same problem could have been redefined. Somebody could have said to you saying accept integers not valid. ऐसे भी प्रॉब्लम है accept integers until prime number is not encountered. यानी जब तक prime number नहीं आता है तब तक integers accept करते रहो. The solution would have been the same. Okay. So let's have a look at the solution that he has conducted. Oh, he says display. Look at this. There are some variables that he has defined. Okay, one first glance I can say it is wrong, but still let us understand. He has defined a variable. One is prime is equal to 0. He could have taken this as a Boolean variable as well. Then remainder and quotient are two variables he takes. We ask you to enter integer. User enters a number. Say user enters integer like 10. He now says calculate remainder is equal to number mod 10. So 10 mod 2 is 0. So remainder is 0. And then he says quotient is equal to number divided by 10. Now 10 divided number divided by 2. 10 divided by 2 is 5. Then he says is the remainder equal to 1 or quotient equal to 1. Now both the conditions are false. Okay. So prime का value अभी भी 0 ही है. So is prime 0 है. So he goes ahead and accepts another number. Prithviraj, you are now accepting another number. So whether let's take another number like 13. Okay. So he says remainder is equal to number mod 2. Remainder is equal to number mod 2. 13 mod 2. Okay, 13 mod 2. Oh, that is 1. And then he says quotient is equal to number divided by 2. That is 13 divided by 2. Now 13 divided by 2, even if you assume that since this particular variable is integer, so अगर आपको ये integer चाहिए था तो numeric लिख के नहीं चलेगा. Let us say integer. Because if I say numeric, it can be real number as well. It can be real number as well. So integer, यानी अगर आपको fraction part को ignore करना है, तो number divided by 2. So 10 divided by 2 is 5. Yeah, 13 divided by 2 is 6. So remainder is equal to 1. या quotient is equal to 1. तो quotient फिलहाल 6 है, remainder फिलहाल 1 है, तो is prime is equal to 1 हो गया है, and he says prime अगर 0 है, तो he comes out and he stops because the prime number has been found. तो अगर if है, तो every if should have an endif as well. Every if should have an endif पहला, and अगर prime number मिल चुका है, तो he should have displayed कि does the question ask you to display? What is the question saying? Let's see. The display का नहीं Let me see. ना. Until a prime number is not encountered. तो prime number encounter नहीं है, नहीं मिलता तब तक करते रहो. तो prime number encounter हुआ ये बताओ ना कि I have encountered a prime number in here. Okay. तो ये कौन सा है solution? This is different. ये कल का है. Okay. Let's test his idea whether it's correct or not. I thought it's a wrong idea, but let's still see whether it's a correct idea or not. Let's take another number. For the first two numbers, 10 and 13, it looks like it's working correct. It looks like it's working correct. Let's take another number. So let's take a number like 21. Okay. So we take a number like 21. 21 mod 2. What is the answer? Prithviraj, 21 mod 2. What is the remainder? Prithviraj, 21 mod 2. What's the remainder? Turn on your videos, 10. everybody. Prithviraj, turn on your video and unmute yourself. Prithviraj, unmute yourself. I'm asking you some questions. Okay. So look at this. 21 mod 2.
आदित्य क्या आंसर आएगा इसका? आदित्य रिमाइंडर क्या आएगा? अरे कोई बात नहीं, कैन यू ऑल नॉट हियर मी? एम आई ऑडिबल, यस और नो? Yes, Yes, yes. sir, yes, sir. You are audible. आदित्य आंसर क्या आएगा इसका? 21 mod 2. If I divide 21 by 2, what is the remainder, Aditya? Uh, संजय? 1, sir, 1. 1 आ गया, तो रिमाइंडर का वैल्यू 1 है। क्वेश्चन 21 डिवाइड बाय 2, आशीष क्या आएगा 21 डिवाइड बाय 2? 10, लाउडर? 10 आएगा, okay. And then we check, is remainder equal to 1? Yes. Is prime is he saying 1, that means he says he is found a prime number. Is 21 a prime number? The prime number becomes 0 and will come out. Is 21 a prime number? no, It worked correctly for the first two inputs, 13 and 10. Yes. But for 21, it has really failed, because 21 is such a number where remainder comes out to be 1, 21 divided by 2, remainder comes out to be 1, but that still is not a prime number. So this is a wrong kind of solution. Thought itself is wrong. Just by putting across these two conditions, you cannot check whether number is prime or not. You cannot predict whether number is prime or not. Anybody else have you all understood what was the problem? Okay, ये कैसे गलत जा रहा है? We have taken 3 input values and we have checked for them, and we realized that was not the right solution. Who else has solved this particular problem? Yes, Sir, I have provided. louder. Sir, I have provided solution. Okay. No, I had asked for the pseudo code. Okay, you have done the flow chart. Okay, let me check your flow chart as well. It's क्या है? Prime number. So let us open up Sanjay's solution and see how right or wrong it is. So let's see what Sanjay does. He has a variable called as number, then there is a prime number, then there is counter, there is minimum, minimum का value 1 है, counter का value 2 है. He accepts an integer and then he checks is number greater than counter, counter का value 2 है. That means suppose if I enter 1, is 1 greater than 2, condition false है. अगर condition false है, the number is not prime. Yeah. Is 2 a prime number, yes or no? Yes or no? Is 2 a prime number? it is No, prime. sir. No, No, sir. No, 2 is also not a prime So number. 2 is prime. 1 is prime number or not? 0 One is and 1 neither is prime not or a composite. Sir, But 0 2 is and definitely 1. prime. So here, No, sir, composite number. 2 is composite number. 2 is not a No, prime sir. number. 2 is Not a prime. prime number. Not a prime number. Sure. Sir, Sir, I, it is prime. sir, check in Google, sir. Not a Okay. So if 2 is not a prime number, then this is probably correct. Huh? Let's take another number. Next time when you run the program, you will enter number like 13. Is number 13 greater than counter 2? Is 13 greater than 2? yes, Is 13 greater than equal to 2? Yes. Yes. sir. So he says num divided by counter is equal to 0 and num divided by min is also equal to 0. Or it never writes such big conditions. हमने कहा था always avoid add by using nested if, but he still tries this. Number divided by counter is equal to 0. That means 13 divided by 2 is that equal to 0? False. And number divided by min, min का value 1 है. So any number divided by 1 is equal to 0. So 7 divided by 1 is how much? 1 7 are 7. What is this? Number divided by 1. Why are you dividing a number by 1? Because any When number I divide a divided. number by 1, will I ever get quotient as 0? Quotient कभी 0 आएगा क्या? Division gives you quotient. Mod gives you remainder. तो आपको remainder check करना था या quotient check करना था? संजय? This and condition doesn't make any sense. Sir. This and condition will always be false. And something is false. False and something is false. So कोई भी number prime नहीं है. There is no number that is prime something. Because the second condition is always false. 10 divided by 1, is that equal to 0? No. 1 times 7 10. Pardon? Sir, 7 divided by 1 is equal to 0, sir. 7 क्या बात divided कर रहे हो? 7 divided by 1 is 0 कैसे आएगा? 7 आएगा. 7 divided by 1 क्या आएगा? हाँ, ये 1 तो 7 mod is 7 5 ना? mod पे. 7 आएगा ना? Yes, sir. So the second condition is false, so no number is prime. Okay. And then you had check for counter. But then
you are checking over here again one more condition, num divided by counter is equal to 0 and num divided by min is equal to 0. That means same condition that you have written over here, you are again checking the condition over here. सर ये स्टॉप करना है ना प्रोग्राम को. ये stop करने के लिए. Okay, but that's wrong. Because first this condition itself is wrong, so there is no question of you going for the second But condition. it is given answer sir. Louder. Answer दे रहा है सर. Answer दे रहा है, तो let's run and check. Let's check. I enter a number like 21. It says 21 is not prime. I enter number like 12. ये तो रुक गया, खत्म हो गया. 21 is not prime और आगे नहीं बढ़ रहा है. क्या है आंसर दे रहा है. Next time if I enter number like 2, कहता है 2 is not prime. Let me enter a prime number. I enter 13. 13 is not prime. सही है गलत है संजय. आंसर दे रहा है, करेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है. आंसर तो दे रहा है, करेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है दैट्स इंपॉर्टेंट. 13 is the prime number. Okay, that's not 13 is the prime number. You are saying it's not a prime. Okay, so you have to run the code and see. So let's look at the next solution. Who else has solved this example? Sanjay हो गया, पृथ्वीराज हो गया, and आशीष. आशीष कौन सा example है आपका solution? 13 या 12. हाँ 12. 12 तो दिया ही नहीं आपने मुझे. आपने एक P3 दिया है और एक HW13 दिया है. और दिया है 12 दिया है. एक given with you. Okay, now let's look at Ashish's solution. What he has done. And I still appreciate Sanjay because he has the courage to write. He doesn't have fear of failure. And I challenge you, if he consistently does that, he will definitely overcome that difficulty. He will definitely come with ideas. So consistent चाहिए. Fear of failure is the biggest hurdle towards becoming a successful developer. And those who fear, कुछ नहीं कर सकते. File, open, HW12. Let's look at what Ashish has done. Integer number है, counter है, counter का value 2 है, boolean number is prime है. He asked the user to enter number, input कर लिया number. Number mod 2 equal to 0 है क्या? Number mod counter equal to 0 है क्या? If that is the case, he says prime है, otherwise the number is not prime. Okay. And is prime false है तो we come out. Now let's test this solution. My first observation says, look, I think it's wrong, but let's test it with some values. Let's test it in some values. Let's take a number like 5. 5 mod 2, counter value 2 है. 5 mod 2, is that equal to 0? True or false? False. False है. False है, तो is prime is true. Number is prime कहा इन्होंने, counter बन गया 2. Is prime is equal to false है क्या? अभी यहाँ true बन चुका है, program stops. So it works correctly for number 5. 5 is prime. So first glance पे सही लग रहा है. Let's look at another scenario. User enters number like 12. 12 mod 2, is that equal to 0? That is true, it is 0. So it says is prime false है, number is not a prime कह रहा है, counter 2 कह रहा है, is prime is equal to false कहते हुए आगे जाएगा. ये false है, तो दूसरा number accept करेगा. तो we accept another number. The next number that we accept now, counter का value now has become from 2, the counter value has now become 3. Look at this. पहले counter 2 था, आशीष अब counter 3 बन चुका है. And then again we go back. We ask the user to enter number. User enters a number. Let's say user enters number like 15. And I say 15 mod 3, is that equal to 0? Yes, sir. Yes, that is true. So we go inside. Is prime false? Number 15 is not prime. Counter now becomes 4. We come back and we again check for the number. Next number. This time around, user enters number. Like say 21 again. User enters number like 21. Counter value 4 बन चुका है. 21 mod 4, is that equal to 0? No, आशीष? sir. False है. False है तो कह रहा है is prime है. Number is prime करते हुए आगे जा रहा है. This will fail for number of values, Ashish, because कौन से Yes, counter yes, से आप got डिपेंड it. करें उस पर डिपेंड करेगा. Got तो it. ये जो कोड लिखा है ना आपने, this will never give you the right answer because every time you are including the value of counter,
For the first Sir, number, value loop of के counter is अंदर 2, whereas for the second number, value of counter will be 3. Third number के value of counter is 4. That means whatever I enter as a third number, you are going to take mod by 4 and check whether it's prime or not. How will mod by 4 tell you whether the third number is prime or not? Will it ever tell? Ashish? no sir, no sir. So now let's work on this solution. Anybody else has made an attempt to solve this particular problem? है कोई जिसका solution हम लोग discuss करें? Look at this discussion will help you to understand where you are committing mistake. आपकी गलती कहाँ हो रही है? And that's very important to understand where exactly are you going wrong. Anybody else has solved? Okay. Sagar, I should not be telling you turn on the camera. Shweta, turn on the camera. Ankita, turn on the camera. Why should I tell you every day? Ankita, Shweta, Prithviraj, turn on the Hello. cameras. Hello, hello. Shweta, turn on your camera. I need to know, are you watching? Are you focusing on what we're discussing? Shweta, turn on your camera, please. Hello. My Zoom wasn't responding, so I connected back right now. Okay. Anyway, your solution was not right. We checked it. I And now we corrected- think about the right kind of solution. I Let's corrected design, one let's solution. make changes in Ashish code that he has written. And understand, first let's understand the concept of pointer, concept of prime number. Now you told me 0 and 1 are not prime, 2 is also not prime, you told me, okay. But then what is a prime number? How do you define a prime number? Anybody? Sir. Hello, Yes, tell me. sir, the number which is divisible by 1 and divisible by itself is a prime number. Okay. Now then, as far as this definition goes, all the numbers in the world are prime. ऐसा कौन सा number है जो itself और 1 से divisible नहीं है? or 2 से Only, divisible sir, नहीं है? sir, only divisible by itself and 1. Okay. तो ऐसा कौन सा number है which is not divisible by only by itself and this thing? Only means what? What do you mean by only? Like, Okay, that means there should not be any other number by which it should be divisible, correct? yes, sir. Okay, that is also a wrong definition because as per my understanding goes, all numbers are divisible by any other number. Give me one number which is not divisible by some number, 2. एक number बताइए जो 2 से divisible नहीं है. Sir, by an integer. No, let's Why is say it- integer 2, of course. Let's ask. 7. First of एक number दीजिए मुझे जो 2 से 7. divisible नहीं है. 7. 7 divided by 2, I can divide ना. I'll get answer is 3.5. Divisible नहीं कहाँ है divisible. 8 divided by 2 will give you 4. 7 divided by 2 will give you 3.5. Look at this. As a programmer, you have to precisely define what I'm trying to do. It should be completely divisible only by 2 and means only by itself and 2 and no other number. Means only by itself and 1. Only by itself and 1. Completely divisible. What is the difference between divisible and completely divisible? No fractions. That means you should not have a remainder, correct? Remainder should be 0 if I divide it. Yes. Okay. So if I do integer division and I'm not going to look at fractions, so 7 divided by 5, if I 7 divided by 2, if I do, so in that case, I'll get a remainder as 1. Means remainder is 1. Okay. Or if I say 3.5, there is a fraction that will be getting. But if it's completely divisible, remainder is always 0. 10 divided by 5, remainder is 0. So the only numbers that should divide it completely are 1 and itself. It should not have any other factors. What is the definition of a factor? What do you understand by the term factor? What are factors of 10? Factors of 10 क्या है? 1, 2, 5, 10. 1, 2, 5, 10 means 1, 2, 5. Correct? Because 1, 2, and 5 divide number 10 completely. That means the Yes. remainder is 0. So it should have maximum 2 factors. It should have maximum 2. 2 factors. कौन से? 1 and
itself. itself. One का तो check करने की जरूरत नहीं. Every number will be divisible by completely by one. That means the only other factor should be itself. There should not be any other factor. Understood, everybody? Yes. Yes, sir. That means to determine whether any given number is prime or not, I'll have to divide that number by all numbers in the range of 1 से तो सब divide होने वाले. So in the range of 2 to n itself. Correct? And जब मैं 2 से n तक divide कर रहा हूँ, I should get only one factor, that is n. But number will always divide itself completely. Like one is dividing number itself, one is dividing any number completely. Number will also divide itself completely. So forget about it. So between 2 to n minus 1, there should not be any factor. So if I am having number 13, between 2 to 12, there should not be any factor. समझ में आ रहा है? No number between, if I am checking for number 13 is prime or not. So if I am checking for any number n is prime or not, I am going to divide that number by all numbers in the range of 2 to n minus 1. And in between them, there should not be any factor. Everybody understood this now? Give me a feedback, yes or no, समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? Yes or no? If you are not understood, I'll explain the concept again. If you understood, we'll proceed further. और बाकी लोग हाँ या ना कुछ तो बोलो. पृथ्वीराज, श्वेता, have you understood the concept? What is a prime number? Shweta? Shweta, have you understood whatever discussion that we are doing? What is a prime number? आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Monica, please call Shweta and check whether she is in the class. Otherwise, we remove her from the meeting. Yes, sir. Check करो. Otherwise, she must have just logged in and went off. Okay, sir. Even if you are new, Sagar is also new, but he is watching, he is responding. तो बताओ तो सही है. I have 10 different ways to explain. But अगर आप respond नहीं करोगे, तो how will I understand? So first, let's try and check whether the number is prime or not. वो code लिखते हैं हम लोग. So we'll jump to this particular solution. I'll make changes in this particular solution. I'll use this solution itself. एक integer number है, एक counter है, counter का value 2 है, इस prime का value false है, ऐसे लिया हमने. And I'm going to divide that number by all the numbers in the range of 2 to n by 2. सारे numbers से मैं divide करने वाला हूँ. So counter का value increment हो जाने वाला है. Every time the counter will be incremented. Okay, I'm going to start with 2. Okay, so I'll not use this kind of loop. Rather, ये loop नहीं use करते हैं. I don't want do while loop. There you go. So we have number counter is equal to 2, is prime is equal to this. That's okay. And then I take a while loop. I take a while loop and I check while counter less than number minus 1. Number minus 1 क्या रहा हूँ? अगर मैं 13 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो I do not want to divide that number by 13. Okay. या एक काम कर सकते हैं, काउंटर लेस देन नंबर कहते हैं. लेस देन इक्वल टू नंबर बाय 1 minus 1 से अच्छा है लेस देन नंबर कहते हैं. तो व्हेन आई से व्हाइल काउंटर इज इक्वल टू लेस देन नंबर, और यहाँ आने पर आई से आई राइट अ स्टेटमेंट. वॉच इट वेरी केयरफुली. काउंटर इज इक्वल टू counter plus 1, and if I over here print the value of counter, can you tell me what will this program do? He has not accepted the number. ये नंबर हम, बट मुझे बताइए व्हाट विल दिस प्रोग्राम दिस कोड डू? जल्दी से बताइए. Sir, it will print from 2 to n minus 1. Very correct. That means the counter का value has changed from 2 to n minus 1.
तो अगर n is 10 तो काउंटर वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नहीं, वेरी करेक्ट. लेट्स चेक इट आउट. जो आप सोचे वो सही है क्या? इफ आई एंटर नंबर एज 10, it has printed answer in the range of 2 से लेके 9 तक. Okay, I run the code once again. If I enter number like 5, it will print numbers like 2, 3, 4, and at 2 से लेके n-1 तक. Now you may be wondering why am I writing? This is how you start thinking. पहले हमने logic design किया. What did we say? We said to check whether number is prime or not, I need to divide that number by all numbers in the range of 2 to n-1. यानी तो यहाँ डिवाइड करने के लिए वो वैल्यू तो चाहिए, काउंटर तो चाहिए. तो वी हैव नाउ क्रिएटेड अ काउंटर व्हिच विल नाउ बी डिवाइडिंग दैट नंबर इन द रेंज ऑफ 2 to n. तो ये काउंटर लिखने की जगह यू कुड हैव आल्सो गिवन दिस अ नेम कॉल्ड एज डिवाइजर. ये मेरा डिवाइजर है और जो मेरा नंबर है वो मेरा डिविडेंड है. तो माय वैल्यू ऑफ माय डिवाइजर शुड चेंज वैरी फ्रॉम 2 to n-1. इससे मैं डिवाइड करने वाला हूँ नंबर को बार बार डिवाइड करने वाला हूँ. तो ये जो मेरा डिवाइजर है, दिस नंबर आई एम गोइंग टू यूज जस्ट टू डिवाइड दैट नंबर. Okay, so if I again run this particular code, if user gives an input as 7, we'll print all the numbers 2, 3, 4, 5, 6. That's precisely what we wanted. Now, take my suggestion. Don't forget it. When you are solving such problems, first try and understand कि आपको वो जो काम है ना कितनी बार करना है. So for that, we have to actually first design a loop. लूप कैसे डिजाइन करना चाहिए जो इंश्योर करेगा कि आप वो काम जितनी बार करना चाहते हो उतनी बार वो रन हो. तो वी वांटेड अ काउंटर, अ डिवाइजर सच दैट it will vary from 2 to n-1 because those are the values with which I'm going to divide the given number and check whether it's completely divisible or not. If it is completely divisible, then the number is not prime. Okay, so we wanted to have that set of divisors. So this will take care of generating that divisor. Now once I have got the divisor, I'll check, divide the number and check. So I'll say if number mod divisor. Okay, that's a condition. Number mod divisor अगर equal to 0 है. What does it mean? If the number mod divisor equal to 0 है, इसी नंबर को डिवाइजर ने डिवाइड कर लिया, तो what do you mean? And उसका आंसर अगर 0 आ जाता है, तो what does it mean? Not a prime number. No, not a prime number नहीं. इस केस में वो उसका फैक्टर है. Divisor is the factor of that number. Yes, yes. Okay, so we are actually solving multiple problems at one time. So I could say over here. The factor is divisor. So if you look at this particular code, this will give me all the factors of the given number starting from 2. 1 नहीं देगा. अगर मैं इसको 1 कर देता, तो it could have given me all the factors starting with 1 as well. तो अगर मैं 1 करता हूँ, तो look at this, ये मुझे सारे factors देगा for any given number. Watch it. Let's run the number. I enter number like 15. It should give me all the factors. ये क्या कह रहा है? 15 देने पर ये क्या हुआ? Oh, print भी हो गया. Let us remove this print, this divisor. ये नहीं चाहिए था. Let's run. And I enter number like 15. ठीक है, 1 is a factor, 3 is a factor, 5 is a factor. बराबर है? Yes, sir. Okay. If I run this particular program once again, if I enter number like 25, ये कहता है 1 is a factor and 5 is factor. Correct ना? 2 ही factor इसके 25 के. Whereas if I run the program once again and if I enter number like 30, तो कहता है 1 is a factor, 2 is a factor, 3 is a factor, 5 is a factor, 6 is a factor, 10 is a factor, 15 is a factor. Yes or no? और हमारे लिए प्राइम नंबर क्या है जिसके कोई फैक्टर ही ना हो. ओके, तो एक भी फैक्टर मिलता है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. वी डू नॉट प्रोसीड फर्दर. सो एंड दैट टू 1 is a factor of every number, so we start with 2. So between 2 to n-1 it should not have any factor. Between 2 to n-1 it should not have any factor.
And the question is not about factors. If I enter number like 14, कहता है 2 और 7 दो factors है. So definitely this number is not prime. अरे दो factors हो या 4 factors हो, एक भी factor है, then also the number is not prime. Even if it has a single factor. So we just do not want to proceed if it has any factor. If it has any factor. तो ये अपना एक condition था. So what I'll do is, if I find a factor, instead of displaying कि इसका factor है, instead of displaying ये इसका factor है, see what I'm going to do. I'm going to do something very interesting. I'm going to say, assign, I'm going to use a trip value. Divisor is equal to number. क्या कर रहा हूँ मैं? Divisor is equal to number. तो एक example लेते हैं. We took number like 10. Take लिया. Yeah. Is divisor 2 less than 10? Is 2 less than 10? Divisor का value 2 है नीचे क्या? Is 2 less than 10? अरे True. बोलो. True है. 10 mod 2 is that equal to 0? True. True है. Divisor is equal to num हो गया. तो divisor का value क्या बनेगा? 10. 10 हो गया. Divisor to divisor plus 1. That means 11. 11. And we go back. Is 11 less than number? No. True or false? False. 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 False है. So we come out and we put a condition to check whether number is prime or not. So यहाँ कुछ तो condition लिखेंगे saying if divisor greater than number is not prime. Where is prime. Let's take another example. Okay. Here I have not done anything. False में मैंने कुछ नहीं किया है. अगर equal to 0 आ जाता है तो I'm not doing anything. So I'm just saying divisor equal to divisor plus 1. Or I could have incremented this particular value of divisor. ये यहाँ से ना ये बार-बार क्यों करूँ? यहीं डाल देता हूँ. So I'll increment it only when this thing is conditions true. तो यहाँ लिखूंगा let's take another number. Let's take number like 7. तो 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे between all numbers between 2 to 6. तो 2 less than 7 है क्या? Yes. 2 mod 7 equal to 0 है क्या? False. Divisor now becomes 3. 3 less than 7 है क्या? Yes. 7 mod 3 equal to 0. False. Divisor now becomes 4. 4 less than 7 है क्या? Yes. 7 mod 4 is that equal to 0? False. Divisor now becomes 5. 5 less than 7 है क्या? Yes. We go here. Number mod divisor equal to 0 है क्या? 7 mod 5 equal to 0 है क्या? False. Divisor now becomes 6. 6 less than 7 है क्या? Yes. We come here. Number mod divisor is equal to 0 है क्या? Number mod divisor is equal to 0 है क्या? That condition is again false. Divisor now becomes 7. 7 less than 7 है क्या? Condition is false. We come out. Number greater than divisor है क्या? Condition is false. Number greater than equal to divisor है क्या? Condition is equal to true. Okay. Condition is equal to true. Number divisor greater than equal to number है क्या? Divisor equal to number है क्या? अच्छा divisor equal to number है क्या? It was 7. 7 equal to 7 है क्या? Yes. So we come here. We say the number is prime. Not prime mean I say the number is prime. The number is prime.
Okay. फिर not prime कैसे ढूंढेंगे? So this will work correctly for the number is prime. Let's take number like 10. Okay. So here I'll have to put some condition to say that आपको आगे divide करने की जरूरत नहीं है. So either I have taken some variable over here or I can check the value of this particular variable. कुछ तो मुझे करना होगा. Okay. So here we are saying कोई तो condition देंगे. अगर number greater than divisor greater than number है, okay, greater than number है, so in that case the number is not prime कहेंगे. And number equal to divisor equal to number है, तो number is prime कहेंगे. उसके लिए what will I do is I'll just say over here number is equal to divisor equal to number plus 1. I'll look at this how it will work out. Check it out. Let's take one example. First, let's take an example. User enters number like 7 once again. Input 7. Divisor value 2. 7 mod 2 is that equal to 0? True or false? False. So since it is false, it says divisor equal to divisor plus 1. So 2 plus 1 now becomes 3. We go here. 3 let's go. Let's do a debug for this. हमारे पास debug का option है. ये आपके variables है. Watch these variables, all variables over here. And I'll show you whatever values that I'm talking about. तो यहाँ देखेंगे हम लोग action में. Here we go. So let's have a look at all these values right in front. क्यों ऐसा सोचे, visualize क्यों करें जब आपके पास ये tool है? When we did not have the tool, we used to do dry run on paper. आज हमारे पास tools है, तो we'll make use of that tool. Let's debug this particular code. Look at the values of the variables. Huh? पहले एक वेरिएबल क्रिएट हो गया यहाँ. एक num है, एक divisor है, एक uninitialized variable है. We have been asked to enter a number to check whether it's prime or not. I enter number like, watch it very carefully. I'm entering number like 10. मैंने 10 enter कर लिया for the first time. Yeah, I enter number like 15. I enter number like 15, which is definitely not prime. मैंने 15 enter कर लिया. So we are checking. Oh yeah. ये condition false है. 15 mod 2 equal to. अच्छा यही देखते हैं. ये दो बार हो गया. Divisor value 16 हो गया. बाहर आ गया. Okay, I just stop. And it has correctly said the given number 15 is not prime. But let me explain you how did it happen. When you enter number 15, we go here. 2 less than 15. 2 less than 15, true or false? Yes. Yes. 2 less than 15, true or false? True. True. 15 mod 2, is that equal to 0? False. False. Divisor now becomes 3. Again, 3 less than 15. True. True. 15 mod 3 equal to 0. True. Divisor is equal to number plus 1. So divisor will now become 16. 16. Is 16 less than 15? False. False. Here. Is divisor greater than number? Yes. Yes. False. So the given number is not prime. And we stop. Okay. Let's take another number. User enters number like 11. Now here. 2 less than 11. True. True. 2 mod 11. 11 mod 2 is that equal to 0? False. False. Divisor equal to divisor plus 1. Divisor now becomes 3. 3 less than 11. True. True. Here we come. Number that is 11 mod 3 is that equal to 0? False. False. Divisor becomes 4. Again we come. 4 less than 11. False. True है. 4 less than 11 true है. 11 mod 4 is that equal to 0? False. 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 Divisor now becomes 5. 5 less than 11? Yes. Yes. 11 mod 5 is that equal to 0? False. False. Divisor equal to divisor plus 1. Divisor now becomes 6. 6. 6 less than 11? Yes. Number 11 mod 6 is that equal to 0? False. False. Divisor now becomes 7. 7 less than number? Yes. 11 mod 7 equal to 0? False. The divisor becomes 8. 8 less than 11? True.
Number mod 11 mod 8 is equal to 0 false. Divisor becomes 9. 9 less than 11 condition is true. 11 mod 9 is equal to 0 false. It becomes 10. 10 less than 11 yes. 11 mod 10 is equal to 0 false. Divisor now becomes 11. Is 11 less than 11? Is 11 less than 11? अरे कुछ तो बोलो. false, False. False है. False है तो we come here. Is divisor greater than number? Is 11 greater than 11? false, sir. False है तो given number is prime. Here we go. ये आ गया यहाँ. Divisor का वैल्यू 2 है देखो. इनपुट कहा आपको नंबर करने के लिए. Just keep on watching the windows. अब जरा ये फ्लो देखते हो कैसे जा रहा है. We are here right now. We have been asked to enter them. Please enter number to check whether it is prime. आपको एक मैसेज दिया गया है. You need to watch these variables. ये आपकी जो variables है जरा उन पे ध्यान दो. Watch the variables that you have. You have num which is uninitialized. मैं enter करते ही initialize हो जाएगा. Divisor का value 2 है. इस प्राइम तो हमने यूज ही नहीं किया था. हमारे पास ये दो वेरिएबल्स ही है. I enter number like 11 now again है. Watch it. तो 11 दिया अंदर आ गए. पहली बार ये देखिए डिवाइजर 3 हो गया. अब डिवाइजर 4 हो गया. Then divisor will now become 5. ये हमेशा false है. 5 11 mod 5 false है. Divisor becomes 6. देखो यार 6 से अब ये 7. 7 के बाद ये 8. Understand the flow. 9. अब ये 10 हो गया. 11 less than 11 condition false है. And so we say come here and the output number is prime. मैंने कहा given number 11 is prime. सही काम कर रहा है. Let's test this for 21 as well. Let's see. 21 को पहले 2 से डिवाइड करें, मॉड करें. देखो यहाँ 2 से, फिर 3 से. 3 से डिवाइड हो गया तो बाहर आ गए. गिवन नंबर इज नॉट प्राइम. Correct? And we don't really need it. We didn't need this particular variable that was there. This was a simple solution that we have designed. यानी हम लोग क्या कर रहे हैं यार. देखो इतना ही solution है. We are dividing that number by all numbers in the range of Yeah, 2 to n minus 1. 2 to n minus 1. Correct? And if no number divides it completely, so in that case, by the time this condition becomes false, divisor will be equal to number. So if divisor is equal to number, we are saying the number is prime. And if the divisor is greater than number, we are saying the number is not prime. And how do I make the divisor greater than number? When we find a factor, we'll say divisor equal to num plus 1. So we come out and we check whether number is prime. Is it not simple? Yes or no? सर वो कंटिन्यू होना चाहिए. Louder? नॉट प्राइम के बाद कंटिन्यू होना चाहिए. जब तक प्राइम एनकाउंटर नहीं होता तब रुकेगा. नहीं वो तो बात नहीं. ये तो सिंपल है. This is only to check whether given number is prime or not. This example is only to check whether given number is prime or not. Okay. जो हमें सॉल्व करना है अपना असाइनमेंट तो कुछ और ही है. But for that assignment to work correctly, should you not be in a position to check correctly whether number is prime or not? Yes or no? Yes. So have you understood this logic of checking whether number is prime or not? Everybody quick feedback. Yes or no? Tick करो. No है तो cross करो. समझ में आ गया तो yes करो. I'm going to solve this and improve on the solution at least 3-4 times. इसे नाम देते हैं हम लोग prime 1. And I want you to have a look at all these versions. संजय नहीं समझ में आया? A11 के लिए रन करो. 11 लिया था जब हमने, तो डिवाइजर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा? 2 से लेके 10 तक. Yes. एंड 2 से लेके 10 तक कोई भी उसे डिवाइड नहीं करेगा. तो डिवाइजर का वैल्यू जब 11 बनेगा, 11 लेस देन 11 कंडीशन फॉल्स है. तो डिवाइजर 11 ग्रेटर देन 11 है क्या? False. फॉल्स है. तो ऐसे द गिवन नंबर इज प्राइम. अगर आप नंबर में भी 11 रहेगा. ऐसा भी कर सकते थे. डिवाइजर इक्वल टू नंबर है तो आई से द नंबर इज प्राइम. एंड डिवाइजर ग्रेटर देन नंबर है तो नंबर इज नॉट प्राइम. ऐसा भी लिख सकते हैं. देखो यहाँ डिवाइजर का वैल्यू ग्रेटर देन नंबर बन जाएगा. व्हेन यू फाइंड अ फैक्टर डिवाइजर वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. तो डिवाइजर अगर नंबर से बड़ा बन जाता है तो इट्स नॉट प्राइम. एंड डिवाइजर इक्वल टू नंबर है देन इट इज प्राइम. डिवाइजर नंबर तक कब आएगा?
डिवाइजर नंबर का तो चल आएगा, ताकि उसने सारे नंबर से डिवाइड कर लिया है, मॉड कर लिया एंड डिड नॉट फाइंड अ फैक्टर। जब कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और आप बाहर आओगे। और ये यहाँ अगर जाते हो आप, यानी फैक्टर मिलता है आपको तो यहाँ आओगे आप, यहाँ आते हो तो आई एम गोइंग टू से डिवाइजर नम प्लस 1, तो डिवाइजर तो नंबर से बड़ा बन जाएगा। तो डिवाइजर अगर नंबर से बड़ा है, नंबर इक्वल है तो वो प्राइम है, नंबर से अगर बड़ा है तो नॉट प्राइम है। आई कैन टेक एनी नंबर, आई विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ रनिंग, फास्ट कर लेता हूँ, एंड आई टेक नंबर लाइक 197। डू दैट ऑपरेशन, बड़ा फास्ट काउंट कर रहा है काउंटर। देखो ये डिवाइजर 17, 18, 19, 20 चल रहा है, अब तक कोई उसका फैक्टर नहीं मिला उसे। देखो 24, 25, 26, इट्स जस्ट डिवाइडिंग दैट नंबर बाय ऑल नंबर्स इन द रेंज ऑफ 2 to 196. It is going to divide by all numbers in the range of 2 to 196. अभी तक कोई फैक्टर नहीं मिला है। I take a number as 197. फिफ्टी ने भी डिवाइड नहीं किया। अभी 62 तक आया, 63 हो गया, 65, उसका कोई फैक्टर ही नहीं है, इट्स अ प्राइम नंबर एक्चुअली। अगर फैक्टर मिलता है तो यहाँ हो गया डिवाइडेड बाय नम प्लस 1, यहाँ हो गया। हम लोग तो वहाँ आ ही नहीं रहे। 101, 102, 103, and go to 196. 197 में बाहर आ गया and कहता है given number 197 is prime. So it divided all numbers in the range of 2 से लेके 196 तक सारे नंबर डिवाइड कर लिया। When divisor became 197, condition becomes false. तो divisor को नंबर है तो given number is prime. Have you all understood this? किसी को डाउट है क्या? And mark my understand, my friends, this is not a good ideal solution. It's a correct solution. It's a perfect solution. Definitely not a good solution. तो ये प्राइम 1 मैंने आपके साथ शेयर किया। ये कंफ्यूजिंग कहाँ है कि ये नंबर इक्वल टू डिवाइजर यानी नंबर प्राइम है नहीं है, ये लॉजिक समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट्स कंफ्यूजिंग, स्पेशली फॉर दोज हु डू नॉट नो द लॉजिक दैट वी आर अप्लाइंग। इफ दे लुक एट दिस कोड दे विल रादर गेट कंफ्यूज्ड। तो एक आशीष ने एक वेरिएबल यूज किया था, वो वेरिएबल मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। लुक एट दिस, आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड एज is prime found। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया is prime found कि मुझे प्राइम नंबर मिला क्या, ऐसे ओके। या is factor found, अगर फैक्टर मिलता है तो नंबर प्राइम है या नहीं है? नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है। तो इस फैक्टर फाउंड का इनिशियल वैल्यू I'll keep it as false. इस फैक्टर फाउंड का इनिशियल वैल्यू I'll keep it as false. तो अगर फैक्टर से प्राइम 2 कहेंगे हम लोग, तो पहला प्राइम था तो ये प्राइम 2 है। इस फैक्टर फाउंड का वैल्यू फॉल्स। तो इस लॉजिक में मुझे बताइए फैक्टर कहाँ मिलता है आपको, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? राइट। राइट साइड पे। तो जब यहाँ फैक्टर मिलेगा ना तो यहाँ हम लोग वो स्टेटमेंट डाल देंगे असाइन इस फैक्टर फाउंड इज इक्वल टू। तो अगर फैक्टर मिल गया है दैट मींस द नंबर इज नॉट प्राइम ना, तो यहाँ चेक करेंगे
अगर फैक्टर फाउंड इज इक्वल ट्रू है, then the number is not prime. और अगर फैक्टर नहीं मिलता है तो नंबर इज प्राइम बिटवीन द रेंज ऑफ n to n minus 1 है ना, 2 to n minus 1. तो यहाँ हमने क्या किया, जस्ट टू अंडरस्टैंड मेक दिस कंडीशन इजी टू रीड. ओके, हमने एक वेरिएबल लिया है इज फैक्टर फाउंड. इनिशियली द वैल्यू ऑफ इज फैक्टर फाउंड इज सेट टू फॉल्स. Initially the value of is factor found is set to false. The moment you find a factor, this operation we are doing to ensure that this loop stops. ये loop में से बाहर आने के लिए ये लिख रहे हैं हम लोग, divisor को num plus 1. तो अगर divisor num plus 1 बन जाता है तो this condition become false. So we stop checking for the rest of the numbers if a factor is found. But before we do that, we are going to set this variable to is factor found is equal to true. तो ये इस loop में से जब when you come out, I check is factor found equal to true. If you have found the factor, then the given number is not found, not prime. अगर आपको फैक्टर नहीं मिला है तो गिवन नंबर इज प्राइम. नाउ टेल मी, व्हेन विल दिस पर्टिकुलर वेरिएबल्स वैल्यू बी सेट टू ट्रू, व्हेन विल दिस वेरिएबल्स वैल्यू बी सेट टू ट्रू. इनिशियली हमने इसे फॉल्स सेट करके रखा है, तो व्हेन विल दिस पर्टिकुलर वेरिएबल्स वैल्यू बी सेट टू ट्रू? Factor is found. फैक्टर इज फाउंड मतलब दैट नंबर वाज कंप्लीट डिविजिबल बाय दैट डिवाइजर. यानी फैक्टर मिलने पर आई एम गोना सेट दिस. तो ये कंडीशन समझना भी आसान जाएगा. इज फैक्टर फाउंड, इफ द फैक्टर इज फाउंड, then I'll say the number is not prime, and if the factor is not found, then I'll say the number is prime. Just to make it a bit more readable. But this has not increased the efficiency, the speed with which the program works. It has actually added one more instruction over here, one more variable over here. Okay, so ये memory भी ज़्यादा लेगा. It will also perform one more operation, but then it is more readable than the previous program. The last वाला जो था ना, divisor greater than number या divisor equal to number, इससे आसान है पढ़ने के लिए. But point is, why did I write this statement? I wrote this statement to make sure that the loop stops. Because if I found a factor, I do not want to check or kitne factors hai. I do not want to check how many more factors are there. There is no point in checking for how many more factors are there. Because if you keep on checking number of factors, it is sheer waste of time. एक भी factor आ गया है, that number is not prime. Then why do it? So this will make sure that the condition becomes false. Some people write the code and check how many factors are there. अरे कितने factors है check करके unnecessarily gonna waste your time. Even if one factor is found, you should not continue. So this particular statement was written so that this condition becomes false and we come on. Have you understood this? ये इस factor form का concept समझ में आ गया है? Yes, sir. Quick feedback, everybody. Tick करो if you are understood. Cross करो if you are not understood. Okay, but I told you this is not a good solution because यहाँ तो अपना काम बढ़ गया है. ये थोड़ा सा readability improve हो चुका है for sure. Readability has improved, but efficiency कुछ ज़्यादा नहीं improve हुआ है. That's because you did not give attention to one very important aspect. कौन से aspect पे आपने ध्यान नहीं दिया इस example में? So let me save this particular code and also share this code with you all first. इसको मैं पहले आपके साथ share करता हूँ ताकि आपके पास भी alternate solutions हो. Just to understand how the code goes on improving. ये आपका prime 2 था. Okay, तो एक prime 1 दिया, एक prime 2 दिया. Now we start with prime 3. इस बार हम लोग थोड़ा सा improve करेंगे इसे. Now tell me, who will explain me the logic? इस example में हमने logic क्या apply किया है? Who will explain me the complete logic? Last two were the same. Who will explain me the logic if I understood? Please explain the logic. क्या concept apply किया हमने? Yes, Bhagish, I cannot hear you. Anybody else? Who will explain the logic? सर मैं करता हूँ. सर हमने num को divisor से divide किया, मॉडुलस डिवीजन किया, और अगर वो डिवाइड होता है तो हम लूप स्टॉप करने के लिए डिवाइजर +1 कर रहे हैं, num +1 कर रहे हैं. डिवाइड करता है. देखो ऑब्वियसली डिवाइड तो कोई भी नंबर किसी को ही करे, कंप्लीटली डिविजिबल लेकिन चेक कर रहे हैं. यस, रिमाइंडर 0 है. हाँ, रिमाइंडर 0 आता है तो हम डिवाइजर में नंबर +1 स्टोर करके लूप एंड करते हैं. लॉजिक वो तो ओके. मेजर आइडिया क्या था? वी आर डिवाइडिंग द नंबर बाय ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ 2 to n-1, and if anywhere the divisor divides that number completely, the number is not prime. ये लॉजिक था अपना. यस सर. Given number was divided by all numbers in the range of
2 to n minus 1. लिख लो. So this was the logic that they applied. I'll show you multiple logics to solve this problem. So the given number is divided by all numbers in the range of 2 to n minus 1. If any factor is found, the number is not prime. That was the logic. तो ये logic आपने apply किया. तो कोई भी factor मिलता है तो वो number prime नहीं है. एक पहला भी factor मिल गया तो we stop it. And we stop करने के लिए हमने divisor में number +1 लिखा, stop कर लिया, loop में से बाहर आया and so on. तो basic idea क्या था? Divide the given number by all numbers in the range of 2 to n minus 1. And if any number divides it completely, then the number is not prime in that range. 2 to n minus 1 में कोई भी number divide करता है इसे completely, then the number is not prime. Otherwise, the given number is prime. What the logic, everybody? Now I'm going to ask you a question. Just give me a second. Can you all see me? No, sir. Can you all see me? No. Yes or no? No, sir. Again. Okay. Now my question to you is, for any given number, which is the largest factor? Sir, approx n by 2. Number by 2. Number itself. Yes, leave it. Okay. Other than number itself, which is the largest factor? Number by 2. Approx. Possibly number by 2. Yes Yes. or no? So last time when we took a largest number, say if I take number like 200, so largest possible factor other than number itself will be 100. 100 से ऊपर तो कोई factor होने वाला है क्या? Between half of the number, that means if I take number like 100, will there be any factor in the range of 51 to 99? No, sir. So in the last portion, remember that I took one number like 197. 197 को आप divide करते जा रहे हो, but beyond number say 95 would or beyond number beyond number 100, would there be any factor which will divide 197 completely? Half के ऊपर? No, sir. No. So you have wasted time. Even to check whether number 23 is prime or not, I need not divide by the number by all numbers in the range of 2 to 22. No. I'll divide that number by all numbers in the range of 2 to n by 2. Then 23 divided by 2 तक ये half ही number तक divide करूँगा. And between them, देखो ना, 23 का half रहेगा somewhere like 11. Okay. तो 2 से लेके 11 तक ही divide करूँगा. If no number divides it completely, 11 के आगे 12, 13, 14 से check करने की point ही नहीं है, because 12, 13, 14, 15, 16, 17, those numbers are not going to divide number 23 completely. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अरे कुछ तो बोलो, सो गए क्या? Yes, हाँ, sir. हाँ. Yes, sir. So was there not wastage of time that we did? ये unnecessary हमने काम करते बैठे by dividing all the numbers in the range of 2 to n minus 1. Yes, sir. Yes. Yes, sir. And as the number becomes larger, the time that you are wasting was even more. Yes, sir. Okay. So we could bring about improvement in our solution now. Substantial improvement, although may not be the best one, but initially logic में इतना काफी है हमारे लिए. So this is third way what we will do. So here we say divisor less than number की जगह I'll say divisor less than or equal to. Watch it. I'm going to say divisor less than or equal to num divided by 2. Number by 2 तक ही divide करूँगा. और ये num divided by 2 बार-बार करने में time जाएगा. Okay, बार-बार ये divide करके check करने में time जाएगा. So instead, what I'll do is I'll introduce one more variable. Which is of type integer called as limit. And जब number accept कर लिया आपने, so I'm going to take that particular variable limit is equal to num divided by 2. And here I'll say while divisor less than or equal to limit.
Now both will do the same operation. But अगर here if I say divisor is equal to num divided by 2, वो बार-बार division operation करना होगा. That I'm avoiding. So I'll perform the division operation only once and store it. So this time around, if user enters number like 27, suppose, yeah, say 29. So I'll say limit is equal to num divided by 2. 29 divided by 2 concept limit में store करेंगे. And divisor will divide it by all numbers in the range of 2 to 14 only. Not 2 to 29 के लिए 2 to 28 तक नहीं divide करेंगे, 14 तक ही divide करेंगे. और 14 तक कोई भी factor नहीं मिल गया तो number is fine. Why waste your time? So this has improved the speed by double, 100% improvement किया. क्यों? Because अगली last time अगर 50 iterations करने वाले तो यहाँ 25 में काम करेगा. That means it will work twice as faster as the previous code. Let's do that and check it out. Watch it. They are asked to enter the number. Look at these variables. क्या हुआ यहाँ? Sir, Variable can only be assigned data that is compatible with the declared type. Each factor found is integer and cannot be assigned false. हाँ, integer लिखा? Each factor found should be Boolean. It should have been Boolean, ना? ये run करके नहीं देखा था क्या हमने? It should have been Boolean. I've been asked to enter number. I'll take a simpler number 7. ये पहले last time का था. It's working correct. But then इसमें वो changes रहेंगे. Yeah, हमने कोड में changes किए हैं. I'll share this code once again with you. ये save कर लिया. I'm sharing the solution. तो मैंने दोबारा शेयर कर लिया. Okay. अब हमें चाहिए तीसरा solution, which is better. तीसरे solution हमने क्या किया? We have taken a variable called as limit. Limit is num divided by 10. Divided by 2, half the number. Okay, and divisor decimal limit रहेगा तो ये काम करेंगे तो बाकी सब कुछ वही रहेगा. Rest all things will be the same. Okay, so let's take a large number. Say let's take a number like 53, 57, and let's try for 57. No, 57, 59 लेते हैं. Okay, and let's try for number 59. How efficient it is? Let's check. आपको ध्यान देना है वेरिएबल वॉच पे. We start running the code. We start with the code. We have been asked to enter number. User enters number like 59. Last time अपना code run कर रहा था from 0 से लेके 2 से लेके 58 तक. अब नहीं करना चाहिए. देखिए यार वो. Here we go. अब ये डिवाइजर पे ध्यान दीजिए. 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, n by 2 तो चलना चाहिए. 11 हो गया. Watch this हो गया. 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. बस 26 के बाद कितना हो गया ये 30. ओके एंड इट हैज कम आउट 30 तक डिवाइड कर लिया है. ओके 30 तक डिवाइड कर लिया सारे नंबर से एंड एक भी नंबर उसका फैक्टर नहीं बना. So we come outside and we say the given number 59 is prime. So the largest number क्या हुआ अभी आपका डिवाइजर क्या हो गया 30. That means we did not traverse यानी 30 तक एक भी फैक्टर नहीं मिला. Actually 29 तक ही चेक कर रहे हैं हम लोग या 30 तक चेक कर रहे हैं. 30 तक एक भी फैक्टर नहीं मिला n by 2 तक. Because here we are checking till divisor less than or equal to limit. Okay. So when divisor becomes more than that limit, then the condition becomes false. तो limit मेरा क्या था? Limit का वैल्यू 29 था. तो divisor जब 30 बन गया तो ये false हो गया. तो ये लिमिट 29 तक ही चेक कर लिया आपने. 29 तक एक भी फैक्टर नहीं मिला. द नंबर इज प्राइम. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज इफ आई एंटर नंबर लाइक 25. अब ध्यान से देखो 25 ले रहे हैं नंबर ऐसे स्लो सो दैट यू कैन वॉच इट. 25 है तो लिमिट पे ध्यान दो. तो व्हेन आई से नंबर 25 एंड वी कंटिन्यू. ओके यहाँ मैंने एंटर कर दिया अंदर आ गया. ओके नाइस प्रोसीड फर्दर. चेक करें कंडीशन. डिवाइजर लेस देन लिमिट है क्या? डिवाइजर 2 है. 2 लेस देन 12 है क्या? तो चेक ओनली टिल 12. अगर कंडीशन 2 है तो यहाँ आ गए. नंबर मॉड 12 इज इक्वल टू नंबर मॉड डिवाइजर. नंबर का वैल्यू 25 है. डिवाइजर 12 है. 25 मॉड 12 इज दैट इक्वल टू 0. कंडीशन इज फॉल्स. तो डिवाइजर बन गया अभी 3. 12 नहीं 3 बन गया. डिवाइजर 2 का 3 बन गया. Then check is 25 mod 3 equal to 0. Condition is false. Divisor now becomes 4. 4 less than 12 है क्या? Yes. So we go inside. 25 mod 4 is equal to 0. Condition is false. Divisor becomes 5. देखो यार. Divisor भी 5 बनेगा. देखो ये 4 है. So that will now become 5. Again check. Is divisor 5 less than 12 है क्या? हाँ. 25 mod 5 is that equal to 0? True or false? 25 mod 5 is that equal to 0? True or false? True. True है. So I say divisible num plus 1. This condition I am writing just to make sure that this condition becomes false. Huh? And then I say is found is equal to 2. A is factor found is 2. बाहर आ गए. Okay. बाहर आ गए. And then is found equal to 2 है कि हाँ the given number is not prime. So the number 25 is not prime. यानी हमने divide कहाँ तक कर लिया? We divided only till number 5. बस. और 5 के बाद ये condition false हुआ. 2 हो गया तो हमने यार ये कंडीशन फॉल्स करने के लिए यार नंबर +1 की जगह लिमिट +1 कहते तो भी चलेगा. लिमिट +1 पे या +1 की जरूरत ही नहीं है. नंबर कहोगे तो भी चलेगा. इट्स जस्ट दैट दिस कंडीशन शुड बिकम फॉल्स. कौन सा कंडीशन शुड बिकम फॉल्स? ये तो डिवाइजर आपका बड़ा छोटा है. लिमिट आपका हाफ ऑफ द नंबर है. तो डिवाइजेबल नंबर बनेगा तो दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स. वी कम आउट ओवर हियर एंड वी प्रोसीड फर्दर. Is that right? Have you understood this logic? तो एक लाइन में पहले लॉजिक लिखो और फिर मुझे क्वेश्चन पूछो. Write down the logic. To check whether given number is prime or not. To check whether a given number is prime or not. To check whether a given number is prime or not. Check whether given number is prime or not. We divide that number check whether given number is prime or not. We divide that number by all numbers or all integers in the range of. We divide that number by all integers in the range of. लिखो. We divide that integer number by all integers in the range of 2 to half of the number. 2 to. We divide that number n by all integers in the range of 2 to n by 2, half of the number.
2 to half of the given number. If a factor is found, then the number is not prime, otherwise it's prime. If a factor is found, the number is not prime, otherwise it's prime. Sir, please repeat last two sentences. This time now it will be something different, but logic वही रहेगा. We divide a given number n लिखो bracket में, by all integers in the range of 2 to n by 2. We divide a given number n by all integers in the range of 2 to n by 2. If any number divides the given number completely, then that number is not prime, otherwise it's prime. And half of the number 30 divided करें, सारे number से नहीं divide करें. That was the major idea. Now tell me, have you understood the logic, everybody? Yes or no? And the improvement, 50% improvement that we brought, 100% improvement that we brought. यानी 50, half the number of operations कम कर लिए, यानी double fast काम करेगा. पृथ्वीराज, अंकिता, संजय, डाउट है कुछ? अंकिता, Ankita, are you there? Ankita, are you there? Ankita, I'll remove you from the classroom if you don't respond. Ankita, I'll count till 3. If you respond, it's okay. Otherwise, you are out of the classroom. 1, 2, 3. Monica, call Ankita tomorrow. Let her not talk. First, meet me. Till the time she doesn't meet me, do not attend. Let her attend the lecture. Okay, sir. She is being removed Okay. from the meeting. If you don't respond, you don't deserve to be in the meeting. That means you're not attending. You don't attend, and then you complain later, you don't understand. If you're there, you have to be attentive. And you have to be regular. Only when you do that, then you can hold me responsible for your performance. If you're not going to pay attention, you're not going to attend the session, and then you feel like by paying the fees, you're going to understand the concept. If that was how easy it was, you could have just deposited some amount somewhere and gone into Google or somewhere else. It's your efforts. I'm just helping out to think in the right way. But if you respond nahi karoge, I cannot take that thing because I'm putting in so much of efforts and you don't bother to even respond. You're insulting me and I'm not here to take any insult. Nahi samajh mein aaya to nahi bolo. That's still okay. I'll explain 10 times. Because that's my duty. And your duty is to let me know whether you understood or not understood. मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ मैंने समझाया तो आपको समझ में आना चाहिए. But tell me at least you are not understood. I can solve this example in 3 more ways. I'll put it across in different ways and help you make sure that कोई तो concept समझ में आएगा आपको. Okay, but then you have to respond. It cannot be the case जैसे ही आप आए और बैठे हो and ऐसे ही चलेगा. That will not do. Okay. How many of you have helped Bhide to solve this problem? There is another assignment. So those who don't have the question can have a look at the problem statement first. अब मुझे क्या चाहिए मालूम है? ये जो हमने pseudo code लिखा है, flowchart draw किया, इसका pseudo code आप लिखो. तो I am not giving you any new assignment. इसी का pseudo code आपको लिखना है. लेकिन ये प्राइम नंबर में वो स्टॉप करने का प्राइम नंबर जो आपण आता सॉल्व केलाय त्याचा pseudo code तुम्ही लिहा. फ्लोचार्ट आपण ड्रॉ केला ना. सर वो स्टॉप वाला बोल रहे हो जब तक एंड काउंटर. पार्डन भिड़े का सॉल्व किया क्या?
हाँ सर भिड़े का PM। तो वही मुझे चाहिए। So let's understand what was Bhide's problem first. Bhide का problem समझने की कोशिश करते हैं। Here we go. Mr. Bhide has given a test to his class. ठीक है? Bhide क्या कह रहे हैं? He would like to have average score of the class as well as the highest and the lowest score. Yani if there is a class of 50 students, he would like to know on average how much the students has secured marks and who is the most smartest and the dumbest fellow in the class. Develop a solution to calculate and print these values. Use strip value to stop processing of the loop. Design interactive computer program that prompts the user to enter number of students and each student's name and score. Print name and score of students with two highest scores. Array. ये additional information चाहिए सर। यानी print names and scores of students with two highest scores, यानी top 2 भी चाहिए। Okay, so this question will address slightly later. इसे थोड़ा सा बाद में discuss करते हैं। top 2 पहला ये problem solve करने की कोशिश करते हैं। Okay, तो यहाँ क्या क्या चाहिए? He would like to have the average score of the class as well as highest and the lowest score. Now if you remember this example we had already solved. सिर्फ वहां मिस्टर भिड़े नहीं था, it was about finding largest and the smallest two numbers in the of all the numbers entered and the average of all numbers. So this was an example which you already solved, but वहां मैंने simple straightforward question था। यहाँ थोड़ा सा it's a question which is more realistic in the real life, but it's the same problem that we had already solved. How many of you solved this? So I can take those solutions directly and work on them. Ashish and Kaustubh has solved it. So let me look at Ashish's solution first. आशीष नंबर क्या है? 13 या 12? 13. I really need to appreciate this guy. Every day he comes with a solution. Right or wrong, doesn't matter. But he's there with a solution every day. So good work, Ashish. Just keep it the same momentum going always. Because that is something which is required to be a successful developer. Okay. It's a passion, it's like something. And okay, Prithviraj also solved it. Very good. So Ashish, Kaustubh, Prithviraj, 3 of them have solved it. So let's have a look at Ashish's solution first. Ashish, flowchart है या क्या है वो? Zero code है? Flowchart. Flowchart. Did I share this prime 3 with you all? Third way? Yes sir. Yes, sir. ये अपडेटेड शेयर किया है या पुराना ही शेयर किया है? जरा देखो तो ओपन करके। तीनों शेयर किए सर। अपडेटेड है पुराना? अपडेटेड। अपडेटेड है, ओके। तर इसमें वो प्राइम नंबर इनकाउंटर होणार ना, तर आपल्याला बाहेर पडायचं होतं, ती कंडिशन आहे याच्यात प्राइम नाही नंबर। तो आता तुम्ही सॉल्व करा ना। मी आता पहिला प्राइम नंबर कसं शोधायचं सांगितलं ना, आता तो तुम्ही इंट्रोड्यूस करा ना। ओके ओके। I did not say this is the solution to the question that was given. अब उस क्वेश्चन में क्या करना है वो आप देखो। प्राइम नंबर आने पे रुकना है। प्राइम नंबर है कि नहीं बताना ही नहीं था। ओके ओके। We just have to stop when the prime number is found. तो वो आप करो। पहले अभी प्राइम नंबर कैसे फाइंड करना है, that is what I have solved. Because all of you had failed to check whether the number is prime or not. तो मैंने आपको partially solve करके दिया, पूरा नहीं है। I have solved only to check whether given number is prime or not. उतना ही चेक किया मैंने। So let's help Ashish friend Bhide sir. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर लिया है, स्कोर का वैल्यू 0 हाईएस्ट है, हाईएस्ट का वैल्यू -1 है। अरे यहाँ गलत गया आशीष यार, हाईएस्ट का वैल्यू -1 हो सकता है। आई विल साइट टू एग्जांपल। आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड and we were attempting giving exams, correct? There was one very terrifying professor that we had, Mr. Kelkar, and he was like army man and who used to teach us mathematics. तो पहले मैथ्स का डर और वापस एक आर्मी मैन टीचर टीच कर रहा था मैथमेटिक्स। एंड वी वर जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम 10, वेंट इनटू द कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, एक बड़ा सा कॉलेज। एंड फर्स्ट वीक ही गिव अ टेस्ट। अरे पहले वो लॉग वगैरह भी हार्डली यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। दोस डेज 11th में वी फर्स्ट गॉट लॉग। आजकल आप स्कूल में पढ़ते हैं, बट वी गॉट लॉग्स इन द क्लास 11th फॉर द फर्स्ट टाइम। And first week, by the time we also understood how he speaks English, because his English was like difficult for us to grab. Okay, and half of our classmates were coming from Marathi medium school, so it was all the more difficult how he used to speak,
and वो army man. And after after first week, while he covered up one topic, he gave a test, and the highest score in our class was -3. Even negative one, the highest score -3 था. Okay, so very difficult. Okay, 10 mark का टेस्ट था, and highest -3 आया. That means nobody got a means. सोचो आप, -3 was the highest. तो आशीष यहाँ एक गलत हो जाएगा. आपने assume किया है ये highest -1 है, and that itself is something which is going wrong. Okay, but let's assume आपके यहाँ हमारे जैसे बच्चे नहीं है, सारे स्मार्ट है, 0 के ऊपर तो मार्क लेंगे, ऐसे अज्यूम करके चलते हैं. तो नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है, ऐसे अज्यूम करके चलते हैं. तो लेट्स सी व्हाट वुड हैपन. So that's an assumption which is a wrong assumption, but let's see. So we are going to assume that nobody gets less than 0. The least marks is 0. आशीष के सॉल्यूशन के लिए. तो लोएस्ट है, लोएस्ट इज -1. ओके, स्ट्रिंग नेम लिया, ट्रिप वैल्यू लिया, ट्रिप वैल्यू 32 लिया. ओके, 32. ये क्या है लॉजिक 32 का आशीष? सर एक रैंडम वैल्यू है ट्रिप. अच्छा, रैंडम वैल्यू है. ओके, स्ट्रिंग फर्स्ट रैंकर लिया, सेकंड रैंकर लिया, एंड एवरेज लिया, फिर रियल नंबर लिया, रियल सम एवरेज है, सम इज इक्वल टू 0 लिया, काउंटर इक्वल टू 1 लिया. ओके, enter the number of students, we accept number of students. Suppose there are 5 students in the class, counter is equal to number of students and score is equal to trip value. Okay, so enter the name of the student, accept counter. Okay, output counter, enter the name of student number 1. Okay, student 1 हो गया, name accept कर लिया, enter the score कर लिया, score of this करो, वो accept कर लिया score. is score greater than highest, तो उसको अगर कोई मार्क्स मिले वो हाईएस्ट से ग्रेटर है क्या, -1 से ग्रेटर है क्या? अगर है तो हाईएस्ट इक्वल स्कोर, फर्स्ट रैंकर का नेम स्टोर कर लिया, ई स्कोर लेस देन द लोएस्ट. अगर लोएस्ट है तो स्कोर लोएस्ट में स्टोर कर लिया, और स्कोर इक्वल स्कोर +1 कर लिया. डिजाइन दैट काउंट्स द यूजर द नेम एंड द नंबर एंड ईच स्टूडेंट्स नेम एंड स्कोर. ओके, हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर. तो लोएस्ट का भी तो नाम चाहिए आशीष. आपने हाईएस्ट का नाम का प्रोविजन कर लिया, लोएस्ट के नाम का प्रोविजन नहीं कर लिया. अच्छा, दिस विल कीप इट असाइड फॉर अ मोमेंट. और आपके इसमें क्या चाहिए था? हाईएस्ट एंड लोएस्ट चाहिए था. लोएस्ट, वुड यू लाइक टू हैव द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास एज वेल एज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर? सर वो दूसरे इसके लिए, टॉप 2 के लिए. यस. ओके, चलो स्कोर का देख लेते पहले, सही काम कर रहा है क्या? स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस दिस, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस सो एंड सो. ऐसा करते हुए आपने सारे स्टूडेंट्स का कर लिया, एंड उसमें से हाईएस्ट एंड लोएस्ट फाइंड कर लिया, एंड काउंटर का वैल्यू नाउ बिकम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ज्यादा हो गया, तो इसमें से बाहर आए. अब मुझे बताइए, इस एंटायर कोड में आपने ये ट्रिप वैल्यू कहाँ यूज किया है? इज दिस और कंडीशन एवर यूज्ड एनीवेयर? हैव यू यूज्ड एनीवेयर? नो. नो. तो यूज नहीं किया है, तो लेट्स गेट रिड ऑफ इट. ओके, तो यहाँ कम से कम सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स एक्सेप्ट होके हाईएस्ट और लोएस्ट सक्सेसफुली फाइंड करेगा. दैट्स करेक्ट. देन एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये एवरेज भी प्रिंट कर लिया, एवरेज भी प्रिंट कर लिया, हाईएस्ट इन द क्लास जो है प्रिंट कर लिया, लोएस्ट इन द क्लास प्रिंट कर लिया. आउटपुट फर्स्ट रैंकर कौन है? has secured the rank in the score of highest. Okay, so this addresses to the highest, lowest and average, but ये address नहीं हो रहा है आशीष. सर फर्स्ट हाईएस्ट का हो रहा है, सेकंड हाईएस्ट का लॉजिक. हाँ, 2 हाईएस्ट चाहिए ना, ये नहीं हो रहा है ना. यस, ओनली 1 हाईएस्ट हो रहा है. ओके, चलो ये फॉर अ मोमेंट थोड़ा सा एडवांस है, ये फॉर अ मोमेंट बाजू रख देते हैं. तो कम से कम ऑल दिस questions had taken care or not, let's say. No, This is sir. just a hint. So we would like to have the average score of the class as well as the highest and the lowest score. Okay, तो यहाँ assume कर लिया था आपने कि lowest score इतना है, तो इस हिसाब से ये काम कर रहा है. So okay, this is addressing to the first part almost right, assuming that there are no negative marking, but that was not an assumption. So let's see what Prithviraj has also done, because he has also solved it. Let me download this code and check it out.
Let's see what Prithviraj does. He has taken number of students, correct? Name of the student, okay. Average है, minimum score है, max score है, integer score है, integer counter. Prithviraj, if you're going to take integer score, then max and minimum should also be integer. Only average can be real. Okay, so this need not be real. This could be integers. Okay. And then average score. Assuming that we are going to take whole numbers. We are not going to take 25.5 as marks. Huh? Because you anyway score taking score as integer. A counter liya, enter the number of students kaha, number of students de liya. And we are saying enter the name of the student, name accept kar liya. Please enter the score of the student, score accept kar liya. Max score and min score wahi le liya. That means whatever score you enter, that itself is max and min. So score better than max score. This condition will never be false. Prithviraj. Whatever score I enter, that we are going to store in max score. So this condition will never be false. So max score is always equal to score. This will never be false. So score, अगर आपने यूजर ने इंटर किया 100 मार्क्स तो 100 is equal to 100 स्टोर कर दिया या 50 दिया 50 is equal to 50 स्टोर कर दिया तो इस 50 greater than 50 that condition always false. Here we go. And then 50 less than 50 that's also false. तो कुछ होगा ही नहीं. Are you getting my point? Yes, yes. Okay. So Ashish's solution is somewhere near. So I'll work on Ashish's solution. Why? Because this is going wrong. ये जो logic आप लगा रहे हैं ना ये सही है. Provided this operation you have done outside the loop. Okay. You missed it by performing this operation repeatedly inside the loop. Statement check that should not belong to the body of the loop you have entered inside. It's a common mistake that you have done. Let us go back to Ashish's solution because that's the solution that we can work on. Let's rectify this one now. Let's take care of this. ये lowest का value कुछ नहीं लेते, कोई initial value नहीं, highest का भी कोई value नहीं. Watch it. We are going to make this code work perfect. Real score है, number of students है, score का initial value 0 रखा है. Okay. Score का initial value 0 रखा है. We ask the number of students, input the number of students. We are not just going to stop with this inputting number of students. Okay. We'll also accept the details of the first student here. Enter the name of the student. Student number 1. उसका नाम एक्सेप्ट कर लिया पहले स्टूडेंट का नाम है इवन आउटसाइड ग्रुप we'll also accept the score of the first student. Enter the score of first student. We accept the score as well. यानी हमने पहले स्टूडेंट का स्कोर और नाम सारा एक्सेप्ट कर लिया. And what is the marks and name of the first student? What Prithviraj is trying to do, I'll do that over here. So I'll say highest is equal to score. Remember that logic that we had written? And what is the first input that itself becomes the highest as well as lowest score. So हमारे लिए कंपेयर करने के लिए पहले स्टूडेंट के मार्क्स है उसी को हम लोग अज्यूम करेंगे वही लोएस्ट है और वही हाईएस्ट है. यानी जो भी पहले स्टूडेंट ने मार्क एक्सेप्ट किए रहेंगे that becomes my reference point. Okay, lowest and highest marks are marks of the first student. And instead of saying while counter less than or equal to number of students, I'll just say less than number of students because पहले student के marks तो आपने accept कर लिया ना. और counter का value I'll not take it as 1. Counter का value I'll take it as 2 because पहला student तो हमने accept कर लिया ना. ये student counter है इसका value 2 लेते हैं because पहले student के मार्क्स accept कर लिया हमने. तो counter का value 1 नहीं रखते हैं. Let's say 2 because we have already accepted name and marks of the first student. Then we said the name and marks of the first student वही है highest and lowest उसी के है. Counter value 2 बन दिया and 2 less than or equal to number of students. And 2 less than or 5 and 2, 3, 4, 5 चार values accept करेगा. So I'll say enter the name of counter name. Okay, name of the student 2. Okay, student number 2. I'll say student number 2
and we accept the name, enter the score, we accept, ये क्या हुआ, enter score कर लिया, and then we check is the score greater than highest. If the score is greater than highest, यानी जो फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स है उससे ज्यादा ये स्कोर है, तो हाईएस्ट इज न्यू स्कोर, एंड ये जो नया नाम है दैट इज फर्स्ट रैंकर, सपोज ये फर्स्ट रैंकर है, इज द स्कोर लोएस्ट देन द स्टूडेंट, अगर है तो लोएस्ट इज इक्वल टू स्कोर, ओके ये परफेक्ट आ रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस स्कोर, जो भी मार्क आया वो टोटल में तो ऐड करनी है, एंड काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, दैट्स द स्टूडेंट काउंटर, कितने स्टूडेंट्स हुए वो था, ओके आई कॉल दिस स्टूडेंट काउंटर, ये स्टूडेंट को काउंट कर रहा था। सर तो ऊपर आपने जो आउटपुट रिमूव किया ना, वो क्वेश्चन में गिवन था कि नेम के रेस्पेक्टिव स्कोर मांगने का, तो फिर मैंने वहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या था कि सर ईच स्टूडेंट का नेम और स्कोर के साथ Accept प्रॉम्प्ट करना करना है। हाँ Yes, करना है, बराबर है, बिकॉज तो हमें किया था, आपने रिमूव कर दिया। रिमूव किया, क्या बात है, कहाँ रिमूव किया, एंटर द स्कोर ऑफ, उसके बाद एक आउटपुट था name, एंटर द नेम, उसके अच्छा नीचे आउटपुट काउंटर, अच्छा तो ये आपने नीचे लिखा था, नहीं एंटर द नहीं नेम सर। ऑफ स्टूडेंट नंबर 1 इनपुट नेम, बराबर है, एंटर द स्कोर इनपुट सर हाँ, वो सेकंड आउटपुट है ना, थर्ड आउटपुट सॉरी, हाँ इसके बाद एक नेम का आउटपुट था। कहाँ डिलीट, बराबर है, क्या डिलीट हो गया, सर वो इनपुट स्कोर है ना, हाँ उसके पहले एक नेम वेरिएबल का आउटपुट था, एंटर द स्कोर ऑफ, और उसका नाम करते हैं। you would like to have average score of as well as the highest and design interactive program that prompts the user to enter number of students and each student's name and score. That prompts the user to enter, यानी हर एक स्टूडेंट का आपको नाम एक्सेप्ट करना है और उसका नेम और स्कोर एक्सेप्ट करना है। सर नाम और स्कोर प्रॉम्प्ट भी करना है। नहीं नहीं, prompts the user to enter number of students, यानी वो पहली बार ही किया, and each student's name and score डिस्प्ले करना, आप कह रहे क्या, यस सर, नेम एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर सो एंड सो था, ये नेम दे दिया, तो यहाँ एंटर द स्कोर ऑफ, अच्छा आपको कहना है किसका स्कोर चाहिए, उस बंदे का स्कोर चाहिए, Yes, कर yes. देते, ओके तो यहाँ लिखा आपने उसका नेम, ओके आउटपुट में उसका स्कोर एक्सेप्ट कर लिया, एंटर द स्कोर ऑफ दिस फेलो, ओके ऐसे चलेगा, एंड देन द स्कोर, ये अगर आपने एंटर किया स्कोर फर्स्ट स्टूडेंट से हाईएस्ट है तो हाईएस्ट इज द फर्स्ट स्कोर, उसका रैंकर स्टोर कर लिया, स्कोर लोएस्ट है तो वो लोएस्ट स्कोर कर लिया, सम कर लिया, और स्टूडेंट काउंटर को स्टूडेंट काउंटर प्लस 1 कर लिया, तो वी हैव दिस वेरिएबल कॉल्ड स्टूडेंट काउंटर, तो आई चेंज दिस नेम टू स्टूडेंट काउंटर, ये स्टूडेंट काउंटर कहेंगे, यहाँ भी लिखेंगे स्टूडेंट काउंटर, तो हमें पता है वो इनपुट काउंटर ज्यादा नहीं है, वो स्टूडेंट काउंटर है। लूप के बाहर भी एक बार सम यूज कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, and student count here we say enter the number of students accept कर लिया, enter the name of student number 1 वो accept कर लिया, enter the score of first student की जगह आपको चाहिए था नाम, enter the score of आशीष जो भी रहेगा, तो यहाँ नेम प्रिंट कर लेंगे, सर बोला सर वहाँ पे सम भी आएगा ना, एक उसका पहले का स्कोर। वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट, तो सम के लिए असाइन ही करने से काफी है, टोटल वगैरह कोई करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे सम इज इक्वल टू स्कोर, तो पहले स्टूडेंट्स का स्टोर इज स्टोर इन सम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये सम को जो इक्वल इनिशियलाइज किया है दैट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, and what is the first student ka score, that is the highest, that is the lowest, and that is the total score, okay and then student counter 2 हो गया है, 2 लेस इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो दूसरे स्टूडेंट का नाम एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे स्टूडेंट का स्कोर एक्सेप्ट कर लिया, और ये चेक करते हुए हमने प्रिंट कर लिया, तो लेट्स सी कम से कम स्कोर तो सही प्रिंट कर लेता है क्या, लेट्स रन द स्कोर, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ 5 स्टूडेंट्स है मेरे पास, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, ये है सपोज राजा,
तो कहता है एंटर द स्कोर ऑफ राजा, राजा सिक्योर्स 50%. Okay, enter the name of student number 2. Student number 2 suppose Rani है. Enter the score of Rani. Rani is studious. Girls are more studious than boys. So she shows 70. Okay. So Rani का score 70 है. Enter the name of student number 3. And student number 3 is Prakash. उसका score, boys are also clever at times. उसका score रानी से भी ज्यादा है. The highest में store हो गया. And then we have another student called as Ravi. ज्यादा लड़के हो गए. Suppose Geeta. And Geeta has no interest in learning, ना? तो उसका score 40 है. ऐसे वैसे पास हो गया. तो minimum हो गया. लोअर score आ गया. And then the last student, fifth student, enter the name of student number 5. Student number 5 is suppose Pooja. पूजा का स्कोर कितना है? तो पूजा फेल हो गई है, या पूजा तो फेल हो चुकी है, 34 है. तो हाईएस्ट से ज्यादा नहीं है, लोएस्ट है. तो वी कम आउट एंड वी से द एवरेज ऑफ द क्लास इज 54.8, हाईएस्ट स्कोर इज 80, लोएस्ट स्कोर इज 34. प्रकाश सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द क्लास विद स्कोर 80. परफेक्ट. यानी आधा प्रॉब्लम तो अपना सॉल्व हो चुका है. यानी लोएस्ट फाइंड कर लिया, हाईएस्ट फाइंड कर लिया, लोएस्ट फाइंड कर लिया, हाईएस्ट फाइंड कर लिया, एवरेज फाइंड कर लिया. नाउ द प्रॉब्लम इज, यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये यहाँ जो भी हमने किया अभी तक. InVid has a difficulty. So we had assumed that the initial score is 0. Okay, ये भी करने की जरूरत नहीं थी. तो ट्रिप वालों को भी हटाना. एक मिनिट, ट्रिप पहले जाता अजून वापरच नाही केला काही, गरजच नाही, काढून टाकू माहिती. एवरेज भी सही फाइंड कर लिया है. So at least we are finding correct average, the top score and the minimum score. ये हमने सही फाइंड कर लिया यहाँ. Okay. तो क्या ये तो लॉजिक समझ में आ गया? क्या वी आर एक्सेप्टिंग द स्कोर ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, दैट बिकम्स आवर बेसिस फॉर कंपैरिजन. तो अगला स्टूडेंट का मार्क्स वी विल कंपेयर विद द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट. इफ द मार्क्स ऑफ द सेकंड स्टूडेंट आर हायर देन द फर्स्ट स्टूडेंट, then the highest marks become the marks of the second student. If the marks of the second student are lower than the first student, then lowest becomes that particular score. इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, स्कोर का टोटल कर रहे हैं, एंड ये क्लास का टोटल है. तो आई शुडंट हैव said sum, I could say class total kind of thing. ऐसा कुछ तो कर सकते थे. You may make those necessary changes. Okay, क्लास का टोटल था, and ये student counter आपका increment हो गया है, and out will come when you say average equal to sum divided class का total divided by number of students. Okay, so this was partially solving this particular problem. And if Bide has given a test in the class, he would like to have average score of the class as well as the highest and the lowest. ये हो गया. Develop a solution to calculate and print these values. तो highest and lowest print करना ये हमने हो गया. Designing the design an interactive program that prompts user to enter number of students and each student's name and score. ये भी हो गया. अब issue ये है बाकी. Print the name and score of the student with 2 highest scores. यानी हमने हाईएस्ट स्कोर के बंदे का नाम प्रिंट कर लिया. अब हमें चाहिए 2 हाईएस्ट स्कोर्स, यानी फर्स्ट एंड सेकंड रैंक दोनों चाहिए. दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, so with this correction that we have done in this particular logic, I share this logic with you, and you can keep on working to find out how can we find the second high score as well. So ये top high score तो अपना सही आ चुका है, तो we would like to have the second high score as well. तो दोनों प्रॉब्लम्स हमने पार्शियली सॉल्व किए हैं. दोनों असाइनमेंट्स वे सॉल्व पार्शियली, ओनली पार्शियली. दिस इज भिड़े वाइल भिड़े. सो दोनों प्राइम के 3 तरीके से सॉल्व किया है. भिड़े का प्रॉब्लम पार्शियली सॉल्व किया है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन भिड़ेस प्रॉब्लम टू मेक इट कंप्लीट. ओके, तो भिड़े का भी सॉल्यूशन मैंने शेयर कर लिया. दिस इज एटलीस्ट फाइंडिंग एवरेज, मैक्स एंड मिन. नाउ द प्रॉब्लम इज top 2 चाहिए. How will you find the top 2 students? So that's a challenge for you all. Okay, so keep working on that as an assignment. Try and solve them. I'm going to extend the submission of assignment till Monday. The previous assignment, those who are not solved, you still have 2 more days to solve those assignments. So solve the previous assignments and work on these 2 solutions. Complete these solutions, because ये 2 solutions complete करना जरूरी है हमारे लिए, because हमने almost कोड डिस्कस कर चुके हैं. स्लाइड चेंजेस. एक में वी हैव टू कंटिन्यू टिल प्राइम नंबर इज नॉट फाउंड, तो वो लॉजिक लिखना है, और दूसरे में सेकंड हाईएस्ट कौन है वो फाइंड करना है. सो थिंक और अप्लाई योर आइडियाज एंड मेक योर बेस्ट अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. कोशिश करो, जितनी कर सकते हो उतनी कोशिश करो एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. ओके.
So with that note, we'll stop over here today. So before I stop, let me look at learning today. क्या समझ में आया आपको? What Sir, we was have not understanding received that you the have? file. सर हे इसका बीडे का सोल्यूशन सर दे दो. Share किया ना while video. No, sir, we have not received it. Wait a minute. By mistake, I shared it only to one fellow. Have you all received it? Video का solution while video.frpg. Yes, sir. मिला कि नहीं? Yes, sir. Mila. अरे बोलो कुछ तो. Yes, sir. Got it. हाँ सर, करंट सॉल्यूशन ये भी फॉल्स होगा ना, जब फर्स्ट का स्कोर और सेकंड का स्कोर इक्वल होगा तो नहीं मुझे चलेगा ना. दोनों कंडीशन फॉल्स होगा ना. इक्वल रहेगा तो भी चलेगा मुझे. I don't mind. फिर दोनों कंडीशन फॉल्स होगा, फिर लोएस्ट ग्रेटर देन होने दो ना. बट जो आंसर आएगा वो गलत आएगा क्या? हाईएस्ट का लोएस्ट का में. नहीं आएगा. इफ देयर आर टू हाईएस्ट, उसमें से एक हाईएस्ट का नाम प्रिंट कर रहे हैं हम लोग. दैट्स द ओनली इशू. सर एक ट्रिप वैल्यू का भी रहेगा. ट्रिप वैल्यू आई हैव नॉट डिस्कस्ड, सो लेट्स कीप दैट थिंग असाइड. Okay. 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 So, Monica, what was your learning from today's session? Sir, prime numbers. नहीं. Then that's a very small thought. Prime numbers of the learning नहीं फिर वो आप नहीं समझे मैं क्या समझाना चाहता हूँ. आदित्य आपका क्या learning है? Sir, problems on prime numbers and factors all. नहीं यानी you did not get it. नहीं समझ में आया आपको. Kaustubh, what is your learning? Sir, to understand the logic properly before solving the problem. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? Sir, लॉजिक तो डिजाइन करना है. लॉजिक अंडरस्टैंड तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं. to check the conditions. Okay, at times there are a lot of conditions. I'm going to give you some tools through which you can test whether all conditions have been checked or not. वो भी हम लोग कर सकते हैं. आशीष, आपका क्या लर्निंग है? सर वो जो फैक्टर वाला लॉजिक था ना प्राइम नंबर का, वो नया मैंने पहली बार देखा, क्योंकि हर जगह सब लोग पूरा वो 2 से n/2 तक का लूप चलाते हैं. अरे मगर ये जो आप लोग मुझे आंसर दे रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक है. ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं. आपको Sir, इससे how आगे to write a efficient code? how to improve on the code efficiency. Yes. Correct? तो आशीष ने लिखा हुआ कोड भी सही था, पर हमने उसमें इम्प्रूवमेंट करते गए. एंड वी कैन if you just apply your mind slightly, so we can improve the efficiency of your program. That's the learning. Yani, the first time you may get the correct code, you may get the wrong code. Wrong code is not the code itself, but then you may rectify to make it code. It's working right. But we shouldn't stop there. We should work on it. हमने प्राइम के 3 वर्जन लिखे, एंड व्हेन यू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके और 2 और वर्जन दिखाऊंगा. ये उससे भी बेहतर रहेंगे जो अभी अब तक हमने सॉल्व किए. तो ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इफिशिएंसी. तो फर्स्ट यू ट्राई एंड गेट द करेक्ट कोड. Once you get the correct one, then see, can I improve on this particular code? क्या इसमें कोई ऐसे काम है जो unnecessary कर रहा हूं मैं? Reduce the size of the program, make the program more readable. Okay, try and get it done within least number of operations. ये learning है. तो हमने ये एक्सरसाइज वही प्रॉब्लम में बार बार क्यों कर रहा हूँ? नहीं तो मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर दिखा देता आपको, और भी इससे बेहतर सोल्यूशन है वही दिखा देता डायरेक्टली. But what I wanted to convey to all of you is, we can improve on efficiency. Some places we improve on the readability of the code. Then we went on to improve upon the performance of that particular code. So readability, performance, all these are important aspects. So don't stop just because your code is correct. Even if your code is correct, see, can I make it more readable? Can I make it more simple? Can I make it run within shortest number of operations? Can I reduce the number of variables? Okay, इन चीजों के बारे में सोचिएगा. So whenever the problems are being given to you, okay. So don't stop. अरे मेरा आंसर सही आ गया. Don't stop over there. And Rupnar had committed one mistake. That's also a learning. So learning क्या होता है ये समझ कुछ. Rupnar ने क्या किया? He solved a problem. पृथ्वीराज ने भी किया. Both of them committed mistake. Prime का. उनका for some given values it was working correctly. सारे numbers के लिए नहीं, some numbers. And they stopped with only taking 2 sample values. Check करके देखा. अरे ये odd है, even है, ऐसे check कर लिया. And number is prime. हाँ हो गया. Array, take enough number of sample values. Prithviraj code was working correctly for 5 and for 10, but did not work correctly for 21.
करेक्ट. So take enough number of inputs to check for correctness of your solution. देखो learning क्या चाहिए था इन सारे discussion से. Prithviraj committed mistake. So Rupnar Sanjay committed the same mistake because their code was partially working correctly for some values. Okay, but were not working correctly for all input values. So when you devise a solution, check it for more number of inputs. Take different types of inputs and check whether your code works correctly on all different inputs as well. Don't stop. एक input देके देखा and if it's working correctly, don't reach to a conclusion your idea is correct. Okay, these are the learnings. This is something that I want you to carry home. Note करके रखो क्या हमें सोचना चाहिए. Programming करते समय किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए. This is what will make you a better developer as compared to others who are there in the market. लोग रहते हैं program लिखने वाले जिनके program fail होते रहते हैं over a period of time. I don't want you to be amongst those developers जिनके program fail होते रहेंगे बीच-बीच में. So give a thought to it. सोचो उनके बारे में. And if अगर आप ये सोचते रहोगे ना तो automatically आप में improvement होगा. You don't be in a hurry to submit the solution. That doesn't mean you will not solve it. Solve करो, test करो उसे thoroughly, and then only submit that particular solution. और आपके पास logarithm है जहाँ हम लोग टेस्ट कर सकते हैं तो एक इनपुट सही आ गया तो थोड़ी ना वेट करेंगे 4-5 इनपुट के लिए रन करके देखेंगे. Are you understanding what is the learning from this session? क्या सीखना चाहिए आपने इस सारे exercises में से? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is what I'm trying to convey. इतने एग्जांपल्स हमने मुझे वो प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं है आपको प्राइम नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं. But in the process of solving prime number, what do we learn? That is more important. Never give up. Okay, always make an attempt. I said I appreciate Sanjay, Prithviraj, Ashish, Kaustubh क्यों इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया. भाग्यश्री सॉल्व इट एवरी डे. आज क्या हुआ मालूम नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो. कोशिश करना इंपॉर्टेंट है. And take my word, if you just keep on trying, just do what I'm trying to tell you, and then when देखो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, संजय ने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है और जब वो सेशन अटेंड करेगा, his understanding will improve much further. Why? Because he already thought too much about that problem. He did not get it right. यानी उसको ये पता चला वो क्या गलतियां कर रहा है. जिन्होंने कोशिश नहीं की, they will never understand what mistake. Who doesn't commit a mistake? How will they improve? Improvement only happens with committing mistakes. Ashish, Prithviraj, they committed mistakes. किसका solution 100% right है? नहीं. But जिन्होंने किया solve ना, they will never repeat that mistake. They'll understand. अरे मैंने ऐसे सोचा था, ये मेरी सोच गलत है. You yourself will start learning. Okay, and this is the very purpose of logic development session. Logic ऐसे ही develop नहीं होता है, just by watching solution. क्या देखना है उसमें से? What are we the entire exercise से क्या सीखना है? वो सीखने की कोशिश करो. Okay, so next time, if I'm repeating the certain things. Okay, try and understand मेरा पर्पस क्या रहेगा वो करने का. पूछो मुझे चाहे तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, एक ही प्रॉब्लम 4 बार क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा आपने क्यों किया. Ask, I'll give you a justification कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. And these are good practices that you have to follow. देखा नहीं मैंने नाम भी चेंज किए कई लोगों के. अरे नाम भी इंपॉर्टेंट है, सही कन्वे होना चाहिए क्या है. काउंटर की जगह स्टूडेंट काउंटर कहा तो और it becomes more readable. So focus on improving the quality of your code. Okay, so that was the takeaway for today's session. 2 ही एग्जांपल सॉल्व किए. चाहे तो मैं 10 एग्जांपल ले लेता, क्विकली सॉल्व करके दिखा देता या सॉल्व एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता. दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मैं 10 लूंगा और इंटरव्यू आपको 11वां एग्जांपल सॉल्व पूछेगा. चलो इंटरव्यू में गलती से उस 10 में से एक क्वेश्चन पूछ लिया, बट ऑन द फ्लोर व्हेन यू आर वर्किंग यू मे गेट सम प्रॉब्लम. हु नोस, दैट्स अ न्यू प्रॉब्लम. करेक्ट. इट्स नॉट विल नॉट बी अमंग्स द प्रॉब्लम दैट वी ऑलरेडी सॉल्व. मैं चाहता हूं कि यू बिल्ड योर कॉम्पिटेंसी टू सच एन एक्सटेंट कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपके सामने, यू हैव द राइट एटीट्यूड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. आप सही तरीके से उस प्रॉब्लम की तरफ फोकस करके सॉल्व करें. ये मुझे चाहिए कि आप में डेवलप हो और इसीलिए हम लोग ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. ओके, सो डोंट मिस एन अपॉर्चुनिटी. ट्राई एंड कंप्लीट दिस सॉल्यूशन दैट वी हैव. आल्सो कंप्लीट द असाइनमेंट्स व्हिच हैव बीन गिवन ऑन द ई-लर्निंग पोर्टल. वो भी सॉल्व कीजिएगा सारे. मैं एक्सटेंड कर रहा हूं 2 दिन से एंड सॉल्व दोस असाइनमेंट्स एज वेल. Okay, Monica has committed that she will solve and share with the problems. That's very good. ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है एंड कमिटमेंट को व्हाट डू यू से पब्लिकली कहना भी जरूरी है कि आई विल डू इट. दैट मींस इफ यू डोंट डू इट पीपल विल लाफ एट यू. तो ये बहुत जरूरी है कि आप कमिट करो खुद को एंड सॉल्व करो. तो एवरीबॉडी प्रॉमिस दैट दे विल ट्राई एंड मेक एन अटेम्प्ट टू सॉल्व ऑल द असाइनमेंट्स गिवन ऑन द ई-लर्निंग पोर्टल एज वेल एज दीस 2 असाइनमेंट्स. Yes, sir. ओके, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. यस तो लाउडली कहो सब लोग. Yes. Yes, sir. Sir. Okay, so I want to see that change in you. Otherwise my efforts are also waste and आपका भी efforts waste. आपके तो efforts और पैसे दोनों waste. That shouldn't happen. We want to get more out of the sessions. एक confidence चाहिए आप में
And that is what this entire exercises are all about. Okay. So thank you all for in the session today. See you next time. I appreciate Sagar and Shweta also today. She has stayed back. Shweta सेशन में बैठे रहो, आपके बैकलॉग आप कवर करोगे, बट बैठने से ऑटोमेटिकली आपको समझना शुरू हो जाएगा, बट ये अटेंड करना जरूरी है. And Sagar is also making a very serious attempt. Sagar, that's very good. But cover up all the previous sessions. Come with doubts to me. Come and meet me अगर आपको कोई doubt है तो. You stay near. So I have covered them. Pardon? I have covered. You have covered. Very good. तो कोई doubts है तो आके मुझे बात करो मुझसे ऑफिस में. Okay. Yes, sir. Okay. So thank you all for in the session today. See you next time. Check e-learning portal. जिनको access नहीं है, ask Monica madam for the access to e-learning portal. Solve those assignments plus this assignment. और वो अपना एक paper reel का assignment बाकी है. Remember that paper वाला assignment बाकी है. Solve that Yes. paper reel assignment. That's a very interesting question that is there. वो भी add Yes. कीजिएगा अपने assignment. येस सर, येस सर. वो मैंने रिमाइंड किया था. Okay. प्रयत्न करा था. By after the concept of loop, we should be solve it. Bye bye. Love you all. Take care.